if we have a certain matlab, if we make a computer model, how do we know that that computer model is giving us the correct results? ठीक है जी. तो the first thing is that to make sure um, you should have a correct model. ठीक है जी. मॉडल क्या होता है? what is a model? What is a model? रियल वर्ल्ड हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसी की तरह होना चाहिए, उसी की तरह होना चाहिए. स्पेसिफिकेशन पे तो बना हुआ. okay, so basically it is the representation of the actual physical जो चीज आपके पास होती है, it is representation of that. It is representation of that system. ठीक है. अच्छा, अब आपका सिस्टम जो है उसको अगर आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो then physically and the computer model should be giving you the same results. हाँ, उसमें हम एक स्टेप जो है वो करते हैं, how to make sure that your model is correct. उसको हम कहते हैं validation. ठीक है जी. तो there is a step that we call ये आप सबसे पहले मॉडल बनाते हैं. ठीक है जी. फिर आप उसकी वैलिडेशन भी करते हैं. और वैलिडेशन हम कैसे करते हैं? वैलिडेशन हम इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नोन डेटा है या कोई काम किसी ने किया हुआ है ऑलरेडी, तो वी चेक दैट. या सिमिलर अगर कोई काम किया हुआ है या कोई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन अपने मॉडल को हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो मॉडल है इज इट रियली रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम. और अगर अब जब हमें पता चल जाए कि इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट सिस्टम, तो फिर वी गो अहेड एंड से दैट दिस विल बी द फिजिकल this will be equivalent to the physical model. जी, did I answer your question? Yes, sir. Okay, so let's see. Again there are math solvers जैसे spreadsheets वगैरह, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं. and अच्छा, we talked about the professional responsibilities of an engineer. Since you are professionals क्या ना, professional जी, professional engineers. ठीक है जी. तो okay, so there are some responsibilities that you need to ठीक है जी. You would satisfy the needs of a customer in a competent, responsible, ethical and professional manner. जी Samiullah, do you want to say something? सर व्हाट इज मॉडल? सर ये समझ नहीं आया. अच्छा, इसने कहा मॉडल तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया भी कि मॉडल इज बेसिकली, मॉडल जो है ना, मॉडल is a representation of a physical system or of a system. ठीक है जी. और मॉडल में हमारे पास जो है बहुत सारी किस्में हो सकती हैं. जैसे फिजिकल मॉडल हो सकता है. ठीक है जी. यू जस्ट मेक लेट्स से अगर आपने कोई चीज बनानी हो तो just for showing it you probably would make a prototype, a small scale model या scaled down model मैं कह देता हूँ. ठीक है जी.
Yes. When I say it represents a system, so what do I mean by that? That it should have the same input and the same output. ठीक है जी? आपके पास फिजिकल मॉडल के अलावा कंप्यूटर मॉडल भी हो सकता है. ठीक है. You just सर represent. मॉडल और सिस्टम में क्या फर्क हुआ फिर? मतलब अगर मॉडल भी वो सब कुछ कर रहे हैं. अच्छा, देखिए सिस्टम जो है ना, सिस्टम तो आप कह रहे हैं कि ये इसका इनपुट है और ये आउटपुट है और ये एक सिस्टम है जो उसको प्रोसेस कर रहा है. ठीक है जी. Yes. मॉडल उसकी रिप्रेजेंटेशन है. रिप्रेजेंटेशन मींस कि जब मैं कहता हूं कि व्हेन आई गिव यू नो व्हेन आई फॉर एग्जांपल, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि F is equal to MA. ये क्या है? Second law. Yes, but this is also a mathematical model, है ना? Yes sir. अच्छा, Yes. what would be the system over here? मतलब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि if we have a certain mass, ठीक है जी, और उस मास पे हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो इट विल प्रोड्यूस क्या? Acceleration, motion. एक्सेलरेशन. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ वी वुड से दैट इसमें ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली. Yes sir. ठीक है जी. सो दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दैट. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप एक मास लें और उस पे आप कहें कि इफ आई अप्लाई let's say if there is a mass of 50 pounds, ठीक है जी, Yes sir. और आप उस पे जो है let's say 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर 100 well let's say जब क्योंकि हम पाउंड फोर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स से मास है केजी में कि सम केजी मास. ठीक है जी. 10 केजी मास और आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन. सो हाउ मच एक्सेलरेशन विल इट प्रोड्यूस? F divided by M sir. F डिवाइडेड बाय m. ठीक है जी. तो 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट्स 10. 10 Yes sir. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Yes sir. अच्छा, now did you perform an experiment? हाँ सर. हाँ? About sir F is equal to MA. No, हाँ सर. हाँ, अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है इस पे? कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट किया है आपने? No हाँ sir. सर. नो. No, बट sir. हाउ डिड यू नो कि आपके पास इतना एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा? सर इस फार्मूले से, इस फार्मूले से. बट दिस इज Arithmetic. नॉट जस्ट, वी नॉट कॉल दिस अ फार्मूला. ठीक है जी, हम मॉडल कह देते हैं इसको. ठीक है जी. तो इसी Okay, तरह sir. Identity. कंप्यूटर में भी इसी तरह हो सकता है कि आप कहेंगे कि मैं इतना फोर्स अगर देता हूं तो मेरे पास इतने मास में कितनी एक्सेलरेशन. तो देखें, ये तो अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल ले ली है, लेकिन छोटा सा व्हाट वी वांट टू से इज कि लेट्स से अगर आपके पास आपने 2000 एक्सपेरिमेंट, हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए we can perform numerous amount of experiments. आप एक टेबल यहाँ पे बनाए, उसमें फोर्स, ठीक है जी, और मास आप दें तो आप एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं. ठीक है जी, समझ में आई ये बात? Yes sir. you will Sir, be able Example एक मिनट. जी 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 सर वैसे सर एग्जांपल है सर, जैसे पेशावर में हैदराबाद फेज 3 में सर और जहाज टाइप चीज है ना सर, जी. कैन वी से दैट अ मॉडल? Yes, that is just, but that is just a model. It is just showing you the shape of that. ठीक है? Yes. तो
देखिए मॉडल जो है ना, जब हम कहते हैं मॉडलिंग भी होता है ना, ठीक है जी, Yes, sir. इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है ना। तो लेकिन Yes, sir. इंजीनियरिंग में जब हम मॉडल की बात करते हैं तो ठीक है, फिजिकल मॉडल है वो, जहाज की फिजिकल मॉडल है ना वो, ये नहीं है, Yes, sir. ठीक है। बिल्कुल है। तो दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन थिंग, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। तो इसी तरह देखें, जब आप मॉडल बनाते हैं तो उसमें आप कुछ एजम्पशंस भी करते हैं, ठीक है जी। Yes, sir. कि फॉर एग्जांपल जब हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए से, तो इट इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी, मतलब ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, फ्रिक्शन या ये सब चीजें, तो हमने क्या किए हुए हैं अभी फिलहाल, नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट किए हुए हैं ना। तो यू हैव टू स्टेट दोज अजम्पशंस, ठीक है जी। आप बताएंगे Yes, sir. कि मैंने ये चीजें एज्यूम की हैं, ठीक है जी। अगर ये फोर्स है और ये मास है, इस पे आप ये फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज है, फर्ज करें मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मॉडल है वो, मैं फर्ज करें, लेट्स से दिस इज मास m, ठीक है जी, and I am pushing it with some force. Let's say I am pushing it with this force F, ठीक है जी। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने how much acceleration will it produce if I put force F over here? जीरो एक्सेलरेशन। Zero. Why? ऑब्स्ट्रक्शन है सर Because there, रास्ते yes, में आपकी। ठीक है जी। तो this is not, then it will not, ठीक है जी, because यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है and we are not stating that, ठीक है जी। तो therefore जब आप मॉडल बनाते हैं तो उसके हर एस्पेक्ट को आप देखते हैं। दिस इज जस्ट सिंपली व्हेन योर मास इज फ्री, कि आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमने इसमें अभी फिलहाल वो मॉडल नहीं किया कि इसको ले जाने के लिए हाउ मच वुड यू नीड, ठीक है जी। यस देयर इज, इट इज इंक्लूडेड इन हियर कि जब हम मास की बात करते हैं तो यस वी हैव इंक्लूडेड इन दैट हियर, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जाए तो देन इट विल चेंज, ठीक है जी। फिर देखें, जब आप फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिड यू ऑलरेडी वुड हैव टॉक्ड, वहां पे हम कहते हैं जब हम फ्लूइड पे फोर्स लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस टू दैट फ्लूइड से चलो जी, ये अगर आपके पास लेयर बाय लेयर सर स्लाइड करता है, लेयर बाय लेयर स्लाइड करता है, राइट। सो इफ दीज आर द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, तो दे विल जस्ट गो ऑन टॉप ऑफ, यानी वो इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, दैट्स इट, ठीक है जी। Yes. तो ये अगर आपका फोर्स है तो दे आर गोइंग टू स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप क्या एजम्पशन करते हैं? लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम है, एंड दैट आप ये भी कहते हैं ना कि फ्लूइड्स में जब आप फ्लूइड की बात करते हैं आप कहते हैं द फ्लूइड इज नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, यस इस तरह के, यस ठीक है। तो ये assumptions जब आप करते हैं ये आपको स्टेट करने होंगे when you
एज एन इंजीनियर जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये जो चीज है ना यहाँ पे जो लिखी गई है कि यू शुड कीप गुड डॉक्यूमेंटेशन. तो दिस गुड डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि whatever assumptions you make, you should state those. ये जो assumptions आपने किए हैं, यहाँ पे जो assumptions हैं, you should state those over here so that everybody know कि this is what is going on. Otherwise, देखिए, the thing is, when we talk about engineering, when we talk about science, we are talking about facts. ठीक है जी? Facts क्या होती हैं? Facts do not change. ऐसे ही है ना? अच्छा, if facts do not change, Yes, sir. then this means that if Mansoor is going to reproduce these facts, he'll be able to reproduce them. If Hasnain is going to reproduce these facts, he should be able to reproduce these facts. So when we state our assumptions, it is easy for one person to understand and reproduce those facts at those conditions. ठीक है जी? So therefore, we need to state all the assumptions. Yeah, we need to keep our documentation very, very clean and neat so that others can benefit from it and others can, reproduce our results and they can make the same thing. So this is one of the responsibilities of a professional engineer. ठीक है जी? We also would ensure good timely communication. ठीक है जी? If you need to ask a question, you should ask a question. If you want to communicate something to someone, you should communicate it. If you have any doubt about the information that you have, you should ask. तो अपने कोलीग से, अपने क्लाइंट से, किसी से भी आपका राब्ता हो जिसमें हमने अभी लिस्ट की कि आपका वास्ता जो है इन लोगों से पढ़ सकता है, तो you would contact them and communicate in a timely manner with them. ठीक है जी? Be competent, keep current in your field of practice. मतलब क्या है कि you should update your knowledge all the time. ठीक है जी? And act professionally and ethically. Professionally means if you cannot change the dimensions of something or the properties of something in written, if physically they say otherwise, if it is your if you have an interest in it, if there is a conflict of interest, kada throws really and ethically too. ठीक है जी? So you should be actually now let's move to the next slide. There are some guidelines. I would not go through these. You should we already probably discussed some of these and you should go through these. ठीक है जी? फिर हमने standards और codes की बात की. Standards and codes हमारे पास क्या है? I'll just briefly touch them. Okay, standards and codes. A standard is specifications for parts, materials, and processes. And why do we do this? Because we want to have uniformity, efficiency, and a specified quality of certain parts, components, materials, ठीक है जी, or processes. Similarly, codes are a set of specifications for design, analysis, and manufacture. And again, the aim of these codes is safety, efficiency, and performance or quality. ठीक है जी? There are different organizations that would do these that would make these standards and codes, and those are listed over here. जैसे Aluminum Association,
American Society for Mechanical Engineers, we have British Standard Institute, BSI, SAE, Society of Automotive Engineers, ASHRAE, NIST, IEEE, and so on, American Bearing Manufacturers Association, ABMA, and so on. ठीक है जी? So there are many organizations or institutions that would make these standards and codes, and these are of particular interest to mechanical engineers, but there are other organizations and institutions for other engineers too. जिस तरह अभी मैंने कहा IEEE, ठीक है जी? कॉस्ट के बारे में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, and we went through that for quite a bit. यानी हमने डिटेल्स में बात की थी कि you can reduce the cost of something by using standard sizes, ठीक है जी? Because standard sizes are made in bulk, so you can use standard sizes. फिर then the next thing was that we talked about well, we said use standard sizes, and then we also said that we should you know because standard sizes kya hongi, they will be easily available, and they are available in stock, so they are less expensive in stock sizes. They are produced in bulk. If we have to produce them, that will cost more, so we can bring the cost down by using standard sizes. For example, table A17 in your book list typical preferred sizes for shafts. We also said that you can bring down the cost by using by keeping the tolerances large if the design allows you. So when you make the tolerances close or tight, it is when you keep them tight, what happens is that it will require additional processing steps. For example, inspection aapko karna hoga, so that the part does not go out of the tolerance. You will require additional steps in making sure that the part remains in the same dimensions, and the machines and the labor that you would need, that will be very, the labor will be very specialized, and the machines will be costly. And then when you are very concerned about tight tolerances, so you will produce less. So that takes the cost really up. For example, यहाँ पे आप देखें तो you see here कि हमारे पास जो tolerances हैं, they are basically, if you look over here, so what goes on is that when you keep the tolerances large, so these are large tolerances, and as you move to make these tolerances smaller and smaller, what happens to your cost? This is your cost. So what happens to your cost? That it goes up, and then it becomes really steep. You are paying a lot when you cross a certain threshold of tolerances, which is plus minus 0.001. What is a tolerance? Tolerance is
basically, let's say if we want a 1-inch shaft, and if it is acceptable with some tolerance, we state that tolerance as plus minus, which is bilateral in दोनों तरफ, 0. I would say 0.001. ठीक है जी. So this is the tolerance, and that tolerance is if the shaft is up to 1.001, it is fine, and if it is less by 0.001, again it is fine within that window. ठीक है जी. So when you keep the tolerances large, there is acceptability of parts within a greater window, and that brings your cost down. But if it is very tight, जब आप tolerances are very tight, so many parts are rejected too, and that adds up to the cost of the design. ठीक है जी. So larger tolerances make it very simple. You should use larger tolerances if your design allow you. ठीक है जी. If your design allow you, that is the condition. तो जहाँ तक भी आपका design आपको allow करता है, you should use larger tolerances. वही ची मुंग पुख्तो के वाई पेन ची पगोड़ा मरीनो पज़ाहर वैसा रवाई सी. ठीक ना? If you can get the functionality, the safety, and all the things that you want your design to perform with larger tolerances, why would you go to the trouble of making things very difficult for yourself and very costly? ठीक है जी. Any question? Any question? No, sir. अच्छा जी. No, sir. We also talked about comparing different designs, in terms of cost, because you can make things in different ways. So maybe you have 2 or more designs, more than one design, and you want to see which design is the most favorable design, which design should you go for in terms of cost. ठीक है जी. So with that, what you would do is you can make use of break-even points. Break-even point क्या होता है? You will compare the cost of one method with another. For example, यहाँ पे this states 2 examples of making screws automatically and then making screws with hands. ठीक है जी. So if you are making it automatically, this is your cost. If you are making it automatically, then your cost is this one. ठीक है जी. When you are making it with the help of just a simple manually, so then this is your cost. और ये जो point है यहाँ पे, this point is known as the break-even point. This means कि इस point पे दोनों तरीके, किसी भी तरीके से आप अगर production करते हैं तो that ends up to be the same. लेकिन if it crosses this point, so then it favors your automatic manufacturing of the screws. But if it is on the other side, so for example, अगर आपकी production जो है वो कम है, तो then it favors the which one? It favors the hand या the manual जो आपका screws making का जो तरीका है, that is favorable in terms of cost. ठीक है जी. So this is how we perform these break-even analysis.
अच्छा जी, please do not drop. Clear viewer drawing and clear my drawing too. ठीक है जी. Move further. Liability. अच्छा जी, what is liability? What is liability? जिम्मेदारी सर. Yes, and that zimmedari is if you make a certain product, if you design a certain product, you are responsible for it. ठीक है जी. If it causes any trouble, if it causes any damage, you will be responsible for it. So again, जो भी design आप करते हैं, if you follow all the rules, then since the responsibility, since the liability is yours, you should be very careful in all the design steps. And as we say, it calls for good engineering in analysis and design, quality control, and comprehensive testing. ठीक है जी. What a good design would be something जहाँ पे हम डिजाइन करें. ठीक है जी. I would say design, manufacture या fabricate and test. ठीक है जी. ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए. If you design something, you fabricate it, it is going to get useful. और फिर जब आप टेस्ट करते हैं, you confirm its output. So this is the practice of a very good engineer, that he will always design, fabricate and test. And that fabrication might be just a model, but he would test it. ठीक है जी. He will test it before giving it to others for use. ठीक है जी. फिर हमने stress और strength की बात की, and as we said, strength is an inherent property of a material we use. Because without material we do not have a design. ठीक है जी. And the properties of material that we use, especially for mechanical engineers, we are very much interested in the ultimate strength, SY, SU,